अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी टीचर अनम सिद्दीकी। अच्छा, टुडे वी विल लर्न अबाउट द इनपुट डिवाइसेस ऑफ कंप्यूटर. दिस इज़ अ वेरी इजी टॉपिक फॉर यू एंड नाउ वी स्टार्ट अबाउट input devices: keyboard, mouse, joystick, light pen, trackball, scanner, graphic tablet, microphone, magnetic ink card reader, optical character reader, barcode reader, and optical mark reader. These are all the input devices, and these devices we use in a different form. And how to use a different form, I will tell you in this video. Okay, firstly, you have to know, and you already know about the keyboard. What is a keyboard? And we have a different types of keyboard, a wireless keyboard or non-wireless keyboard. And the number one is the keyboard. The all keyboard have a same keys type and same number of key and same key types. Okay, number one also, keyboard are two sides of 84 keys and 101 and 102 keys, but now the keyboard with 104 key or 108 key are also available. In the further keyboard or in the previous keyboard or old keyboards, we have 84 keys. It approximate 84 to 101 keys, consist on the 101 keys, but now advanced keyboard consist on 104 and 108 keys are available. We have types of keyboard is typing key, numeric key, function key. A very simple how to define and how to write in your exam. You just memorize the type of keyboard, type of keys: typing key, numeric key, and function key, and just remember the concept of these keys. Okay, these keys include letter key A to Z. The typing key are include A to Z key, and the numeric keypad like a calculator, and this is a consist of a 17 keys, and the function key F1, F2, up to F12. This is a key used for a specific purpose. Okay, and which specific purpose I will discuss with you. And the control key, we have a very special control key. These are the very special key and very usable key. These they provide the cursor and screen control. These are the screen control key. When we don't use a mouse, then these key working on. Okay, it includes a directional arrow key. We have a 4 key: the left arrow key, right arrow key, up and down arrow key. Okay, and this key is also home key, end key, insert key, home key, insert key, delete, page up, page down, control key, alter, and escape key. These are the control key. And the control key and alternate key always work with the another key, not a single use. Okay, but we have a single operation, have a page down key and page up key, these key. Then the special purpose of keyboard also contains some special purpose keys such as enter, shift, caps lock. Caps lock key for use for capitalize the words, capitalize the letter, and the numlock key is a keypad unlock key. Okay, the space bar key is used for a space. Tab key, it used for 8 spaces of tab. Consistency. ठीक है, same difference between the each letter. Print screen key used for a print. And then the further input device, we have a mouse. Mouse is the most important popular pointing device, also cursor control, and having a small palm. It has a two button called left and right button. Wheel is present between the button. A mouse can be
used to control the position of the cursor on the screen. The advantage of the mouse is that you all of you know about the mouse is a very easy to use device, and easy to use cursor device. Okay, uh, it is easy than the keyboard. And the advantages of mouse is easy to use, not very expensive, move the cursor faster the arrow key of the keyboard. मतलब अगर हम कीबोर्ड यूज़ ना करें ना तो माउस हमारा सारा काम कर देता है कहीं ना कहीं, सिवाय टाइपिंग के, एक्सेप्ट टाइपिंग के. ओके, नाउ वी डिस्कस. अच्छा, यहाँ पर ये जितने भी मैं आपको टॉपिक समझा रही हूँ, ये टॉपिक आप यू हैव टू राइट डाउन, बिकॉज ये मैंने बहुत ज़्यादा यूँ कह लो कि चुन कर लिखे हैं आपके लिए. ठीक है, ये आप इसकी जो डेफिनेशन है आप इतनी लिख देते हैं डेफिनेशन, दैट इज़ इनफ. joystick is also pointing device which is used to move the cursor positioning on the monitor screen. ठीक है, जॉयस्टिक जो है वो आपने देखा होगा, आप जहाँ पर जाते हैं घूमने फिरने या आप कहीं पर किसी गेम एरिया में जाते हैं, आपने देखा होगा एक घोड़े पर बैठकर अगर आप गेम खेल रहे होते हैं तो उसके नीचे क्या है, वो जॉयस्टिक ही लगी होती है उसके नीचे. ठीक है, एंड ट्रैक बॉल इज़ ऑल्सो इनपुट डिवाइस. आपने देखा होगा आपके आपका जो लैपटॉप होता है उसके ऊपर एक छोटी सी बॉल लगी होती है, लाइक द ट्रैक बॉल. अब ट्रैक बॉल डिवाइस जो वो खुद पूरी मूव करनी नहीं पड़ती, माउस आपको पूरा मूव करना पड़ता है, बट ट्रैक बॉल क्या होती है, उसकी जस्ट बॉल मूव करनी पड़ती है आपको. ठीक है, स्कैनर आपको पता है, स्कैनर आपकी मोबाइल की तरह से मोबाइल में आप पिक्चर को कैप्चर करते हैं, इसी तरह स्कैनर भी आपका एक फ़ोटो कॉपी मशीन देखी है आप लोगों ने, उसकी तरह का होता है. आप उसको अपनी पिक्चर को उसके ऊपर रख के स्कैन करते हैं. उसका काम क्या होता है कि आपकी पिक्चर को कैप्चर करके इट कन्वर्टेड इनटू अ डिजिटल फॉर्म, क्योंकि बिकॉज योर कंप्यूटर नो द डिजिटल लैंग्वेज, द स्कैनर कन्वर्ट योर इमेज इनटू अ डिजिटल फॉर्म 001 फॉर्म, एंड देन कंप्यूटर अंडरस्टैंड योर इमेज or any NIC card, whatever you have pasted on the scanner, जो भी आप उसके ऊपर पेस्ट करते हैं वो उसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है. स्कैनर का ये काम होता है और फिर वो इन्फॉर्मेशन भेजता है आपके पीसी को, फिर आपका पीसी अंडरस्टैंड करके उसको डिस्प्ले करता है आपकी स्क्रीन के ऊपर और प्रिंट भी देता है आपको. ठीक, इसके अलावा ये तो मेन आपकी थी जो आपके नोट्स आते हैं, जो आपका नोट्स से मैं बोल गई, आपका जो पेपर में आपके छोटे छोटे टॉपिक्स आते हैं ये उससे रिलेट मैंने आपके नोट्स तैयार करके दिए हैं. अदरवाइज़ जो आपकी ये जो डिवाइसेस यहाँ पे मौजूद हैं, लाइट पेन हो गई, ग्राफिक टैबलेट हो गया, माइक्रोफोन हो गया, मैग्नेटिक इंक कार्ड रीडर हो गया, ऑप्टिकल कार्ड रीडर हो गया, बारकोड रीडर, ऑप्टिकल मार्क रीडर, ये मैं आपको दिखा देती हूँ ये किस तरह से है और मैं इसके बारे में आपको समझा भी देती हूँ. इफ़ एनी चांस अगर इस पर कोई शॉर्ट नोट आ भी जाता है तो वो आप इजीली लिख सकेंगे, बहुत इजी है. यहाँ आ जाएं जी. अच्छा, लाइट पेन देखें, लाइट पेन का क्या काम है. देखें, लाइट पेन आपका जो होता है पॉइंटिंग डिवाइस से सिमिलर पेन की तरह होता है. ये क्या करता है, आपकी स्क्रीन के ऊपर जस्ट थोड़ा सा मार्क जैसे होता है वो करता है. ठीक है ना, जैसे इस तरह से एक लाइट पेन होता है जो आप जो भी कोई चीज़ मार्क करना चाहते हो वो उसी वक्त ही वर्चुअली मार्क करता है. ठीक है, अच्छा, और ये डायरेक्ट आपकी स्क्रीन पे भी यूज़ होता है. जैसे आपने टैबलेट पीसी देखें, टैबलेट पीसी के ऊपर जिस तरह से यूज़ होता है इसी तरह से. ठीक, आप यहाँ आप आ जाएँ डिजिटाइज़र. डिजिटाइज़र इज़ यूँ समझ लें कि a copy of or another copy of your टैबलेट पीसी. ठीक है, जहाँ पर कुछ ऐसे एरिया है, अफ्रीकन एरिया हैं और बहुत सारे ऐसे एरिया हैं जहाँ पे बच्चे इन्हीं के डिजिटाइज़र के ज़रिए ही पढ़ रहे हैं. ठीक है, आप जैसे फॉर एग्जांपल आप पेन पेपर यूज़ किया करते थे, अब क्या है आपका डिजिटाइज़र आ गया है, पेन पेपर की जगह आप डिजिटाइज़र यूज़ किया जाता है. इनपुट डिवाइस विच इज़ कन्वर्ट एनालॉग इंफॉर्मेशन इनटू अ डिजिटल फॉर्म, डिजिटल कन्वर्ट सिग्नल फ्रॉम टू टेलीविज़न कैमरा इनटू सीरीज़. इसमें क्या होता है कि ये आपकी कनेक्ट किया जाता है आपके पीसी के साथ, और जब आप इसमें जो भी कुछ लिखते हैं या टाइप करते हैं ना, वो सिंपली आपके पीसी में इनपुट चला जाता है, सेम जो भी आप इसके ऊपर लिखते हैं पेन से. ठीक है, इसका बड़ा मज़े का यूज़ है और बहुत मज़ा